Hey, hi. Now this is problem 2.18, page number 32 और ये दयाल की पुस्तक में है। ओके, सो नाउ द प्रॉब्लम इज अपने पास एक डैम है और इस डैम पे तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। पहला फोर्स इज 50 किलो न्यूटन्स, दूसरा फोर्स इज 120 किलो न्यूटन्स एंड तीसरा फोर्स इज 30 किलो न्यूटन्स। एंड सवाल ये है कि वी हैव टू फाइंड अ रिजल्टेंट फोर्स। नाउ रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। इफ देर आर एन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग, मुझे एक ऐसा फोर्स चाहिए विच इज इक्वल टू ऑल दीज थ्री फोर्सेस। सरल भाषा में ये तीनों फोर्स जो काम कर रहे हैं वो सेम काम मुझे एक फोर्स से करवाना है। यानी टेक्निकली आई वांट द रिजल्ट of all these three forces when I add them. So, resultant is also a force. And force का मतलब होता है it's a vector quantity. And if it's a vector, it should have a magnitude and a direction. अब सवाल ये उठता है कि मेरा ये जो सिस्टम है इसमें मुझे जितने भी फोर्सेस दिए हुए हैं उन सब का रिजल्टेंट निकालना है। How will I do that? सबसे पहले याद रखो कि whenever you start a problem, you have to be clear with your sign conventions. यानी if it's so जितने भी forces है along the x direction, I have to add them up. जितने भी forces है along the y directions, वो भी हमें add करने हैं. Now अगर मैं x डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में अगर मेरा फोर्स है तो मैं बोलता हूँ इट्स पॉजिटिव। अगर x डायरेक्शन में मेरा फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में एक्ट हो रहा है तो मैं बोलूंगा इट्स नेगेटिव। अगर मैं y डायरेक्शन में ऐड सबमिशन कर रहा हूँ और फोर्स अगर ऊपर जा रहा है देन आई विल से इट्स उसका साइन पॉजिटिव है। अगर फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी साइन नेगेटिव लेनी है। नाउ फॉर दिस गिवन सिस्टम अपने पास तीन फोर्सेस है और हमें इन तीनों फोर्सेस को ऐड करना है सो दैट वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स। सो शुरुआत करते हैं पहले फोर्स से। वी हैव टू ऐड these forces along x direction and along y direction. So let's start to add these forces along x direction. So we'll say कि यार I have to sum all these forces in the system along x direction. अब ये जो अपना पहला फोर्स है 50 किलो न्यूटन, इट्स अबाउट x axis and उसका जो डायरेक्शन है इट्स ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट विल बी पॉजिटिव 50। अपना जो दूसरा फोर्स है 120 किलो न्यूटन्स, इट्स about the y axis, तो उसका x axis में there is no contribution, it's zero। जो अपना तीसरा फोर्स है 30 किलो न्यूटन्स, it is acting at some angle। तो अगर वो एंगल में एक्ट कर रहा है so we have to find the x and y component of this force 30 किलो न्यूटन्स। so इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं and let's analyze कि इसका x component और y component क्या होगा। So this is the line of action of this force 30 kilonewton। अब मुझे इसका x component और y component निकालना है। So this is the y component and this is the x component। Now if I want to know कि यार इसका x component क्या है और इसका y component क्या है, I should know the angle this force is making with this wall।
तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे देन वी कैन नोटिस कि let's say this is A, this is B, this is C and this is D. So we can notice कि AD is 5 meters and BC is 2.5 meters. So let's draw a straight line. Now this length is, let's say this is E. ED is equal to 2.5 meters because this 5 minus this 2.5 will give you 2.5. Alright. And this height CE will be equal to this 6 meters. So this is 6. अभी मुझे theta निकालना है. So we know that if this is theta, we know that tan theta will be equal to opposite side, which is 6, divided by the adjacent side, which is 2.5. So theta is equal to tan inverse of 6 divided by 2.5, which is equal to 67.4 degrees. Now if you अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो this angle theta जो 67.4 degrees है is equal to this angle by similar triangles. But what we are interested, हमेशा याद रखो हमको हमेशा ये इंटरेस्ट होता है कि मेरा जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है हमेशा and it should be an acute angle because ये भी x axis है, this is x axis, so even this is an angle but we are interested in the acute angle, so this acute angle will be equal to 90 minus 67.4 which will be equal to 22.6 degrees. Okay, so once we are done with this, now let's get back with the addition along the x-axis, so along the x direction. So first force was 50 kilonewtons and because वो right में act हो रहा था it was positive. अपना जो दूसरा force है 120 kilonewtons, it is acting along the y direction, so x direction में it is 0. अपना तीसरा force है which is 30 kilonewton, उसका x and y component जो हमने अभी निकाला will be along the x-axis it will be 30 cos 22.6 and along the y direction it will be 30 sin 22.6. So along the x direction जो तीसरा फोर्स है that will be equal to 30 cos 22.6 but इसका direction जो है it is on the left hand side, so if it acts on left, if the direction is left then the sign should be negative, so this positive will become negative. All right, so this is equal to 22.3 kilonewtons. Similarly अभी हमें all the forces along the y direction add करने हैं, so summation of all the forces along the y direction will be equal to, now अपना जो first force है 50 kilonewton वो x axis के about act कर रहा है, so about the y direction there will be no contribution, so it will be 0. जो दूसरा force है which is 120 kilonewtons, it is acting about the y axis, about the y direction, so it will be 120 kilonewtons but it will be negative. Why? Because वो नीचे act हो रहा है, so this will be negative.
120। अब हमारा तीसरा जो फोर्स है विच इज दिस 30 किलो न्यूटन, उसका जो y कंपोनेंट है जो हमने अभी निकाला था दैट इज 30 साइन 22.6, बट उसका भी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, सो अगेन दैट विल बी नेगेटिव, सो नेगेटिव 30 साइन 22.6 which is equal to negative 131.5 किलो न्यूटन्स। ऑलराइट, सो अब हमको पता चल गया है कि मेरे जितने भी दुनिया भर के फोर्स थे उनको जब मैंने एक्स डायरेक्शन में ऐड किया तो इट कम्स टू 22.3 किलो न्यूटन्स, एंड जब मैंने उन सब फोर्सेस को वाई डायरेक्शन में ऐड किया तो इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव 131.5 किलो न्यूटन्स। Now, the resultant is just the summation of these two vectors. So let's prove that. अपन एक drawing बनाते हैं which will be the vector summation of these two forces. Along the x direction, it's 22.3. That means it's positive. So if this is the point from where I start, so 22.3 positive will be in this direction. So let's take a scale. Let's say that 1 centimeter is 10 kilonewtons. Alright. So this is force along the x direction which is 22.3. अब मुझे ये force उसे add करना है along the y direction. So this force means that it's the force which is along the y direction because we have added all the forces along the y direction. So this force will be in y direction. या तो ये ऊपर की तरफ होगा जो यहाँ से शुरुआत करेगा या फिर ये नीचे की तरफ होगा. But as we know, अपना जो sign है that is negative, that means it is नीचे की तरफ. And let's take a scale. Let's say 10 kilonewton is 1 centimeter. So this would be 13.15 centimeter का line. And वो नीचे की तरफ रहेगा. क्यों? Because अपना जो सिग्मा एफ वाई है वो नेगेटिव आया. अगर पॉजिटिव आता तो ये ऊपर की तरफ होता था, बट सिंस अभी नेगेटिव आया है सो दिस एरो विल बी डाउनवर्ड्स. सो व्हेन यू टॉक अबाउट वेक्टर्स, इसकी जो लेंथ होती है दैट लेंथ इज द मैग्नीट्यूड, एंड ये एरो का जो डायरेक्शन होता है दैट इज द डायरेक्शन of the force. When you talk about resultant, it's just the summation of these two vectors. So this is our summation of forces along x direction, and this is summation of forces along the y direction. And resultant is just a vector which, so when you add forces, it is head to tail. यानी इसका जो head है उसको जो next force रहेगा उसका tail लगेगा. अगर और एक force है, let's say ये force, so इसका head will be connected to the next force का tail, and resultant is tail to head, so this tail to this head, ये अपना resultant है, and this is the angle that the resultant makes with x-axis. So you can make out, this is just a Pythagorean theorem से तुम बोल सकते हो कि यार मेरा जो resultant है that should be equal to under root of summation of all the forces along the x direction ka square plus summation of all the forces along y direction ka square. And it makes sense. This hypotenuse will be equal to this square plus this square.
सो अपना जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ summation of all the forces in x direction is 22.3 and summation of all the forces along y direction is negative 131.5. So it's 22.3 का square plus negative 131.5 का square. So the value of our resultant is equal to 133.4 kilonewtons. अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि what is the angle that my resultant is making with x-axis. Basically मैं direction जानना चाहता हूँ. So resultant is nothing but it's the summation of all the forces along the x direction and all the forces along the y direction. So this is how you add vectors. अगर एक वेक्टर है तुम्हारे पास उसको तुमको नेक्स्ट वेक्टर जब ऐड करना है तो जहां पे उसका सर खत्म होता है वहीं से दूसरे की पूंछ शुरू होगी एंड और एक फोर्स है तो वापस से इसके सर से दूसरे की तीसरे की पूंछ शुरू होगी एंड रिजल्टेंट इज नथिंग बट कनेक्टिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर to the head of the last vector. So upon हजारों force we can add them up and then the tail of the first to the head of the last will be the resultant. And in this case, because this is a hypotenuse theorem, you can say that yeah, this resultant should be equal to summation of all the forces in x direction under root plus summation of all the forces in y direction, and then you get this resultant which is 133.4. अब सवाल ये उठता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा. नाउ इफ दिस इज थीटा देन यू विल से कि यार अगर ये थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा tan theta will be equal to the opposite side which is summation of all the forces along the y direction divided by my adjacent side which is summation of all the forces along x direction. Then I can say that मेरा tan theta will be equal to अपना sigma fy was equal to negative 131.5 and अपना sigma fx was 22.3 kilonewton cancel हो जाएगा is just a constant. Alright, so theta is equal to tan inverse of this number which is negative 131.5 divided by 22.3 which is equal to negative negative 80.4 and it makes sense. ये जो मेरा angle बना है this is my x axis, so this angle is negative, so theta is negative what, negative 80.4 degrees. So अगर positive होता तो यहाँ बनता था but this is negative, so this is my 0 degree. And when someone says कि यार it's -5 -10 -100, so I should come about this direction, so -80 is this direction. So this is how you find the resultant and the direction of the resultant. Alright, see you in the next video. Bye bye.